Good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? Very good evening, Sarita. All clear? All okay, very good. Beginners, no idea about preparation. Don't worry. Now, preparation strategy को लेके मैं already बहुत गुड़े sessions आनीची, ना? So you can watch those recordings. से recordings गुड़ा का सबू available अच्छी थी, देखी परिवे समझ. ठीक है जी? Very good evening, Santosh. समस्त join करूँचंदे धीरे धीरे. Problem? Yes. Good evening all. प्रोब्लेम कौन होता टेक्निकल प्रोब्लेम कौन पे यूट्यूब रे बोध हुए किसी दिन हला लागी रही लास्ट 3-4 डेज ना 3-4 डेज वी आर फेसिंग इश्यूज इन कमिंग लाइव लास्ट क्लास में सेम प्रॉब्लम हेतला वी स्टार्टेड 15 मिनट्स लेट टुडे आल्सो सेम थिंग वी स्टार्टेड 15 मिनट्स लेट एनीवे फॉर्चूनेटली आई कुड एबल टू कम लाइव ठीक अछि ऑल क्लियर तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी या ऊपर हम डिस्कशन करिया लास्ट क्लास रे कोन देखथले गत काली क्लास रे कोन पढुतले हमें गत काली क्लास रे हमें मनी एंड बैंकिंग टॉपिक देखथले गत काली क्लास रे हमें मनी एंड बैंकिंग देखथले sorry the to online source sufficient now if the online source is legitimate authenticated then definitely sufficient now online means only teaching platform is changed offline to online only the mode of study changed but syllabus topics question answer writing guidance nothing changed that remains constant joda offline delivery hotila now that is delivered in the online mode only if mode is changed then no problem at all you can rely completely but if you're randomly searching something randomly search करके पढ़ुछन then that is the problem यदि randomly search करछन्ती randomly पढ़ुछन्ती एटू सेटू एटू गोटे टॉपिक then that is the problem but what I will advise please use a legitimate source what is legitimate source को continuously use करंतु up to end of your preparation now that will be beneficial ठीक है जी very good evening शिवांगी आउ किछि क्वेश्चन अछि कहारा anyone any question किछि specific question अछि now already post आसी सतले 314 now OS ORS आउ किछि rest of the post now से सब मध्ये ऐड हेइ चंती already आजि notification आसीछि so by that notification some extra post new post for group A class 1 OS post created ORS post that is also added OS और ORS add हेइ ठीक अछि you are from Chhattisgarh oh, no problem you can apply for OPSC ये चैनल डेडिकेटेडली पूरा सिलेबस कवर हबो की yes now पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट 8 क्लास जहां मु नउची फिर सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स गुडा को नउची जोड़ा को इंपोर्टेंट टॉपिक्स रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स से टॉपिक नउची ना पूरा कोर्स पीडब्ल्यू एप्लीकेशन देख परिबे एप्लीकेशन में full course is available and in a very affordable or a very low price I can say now only prelims by across course 1499 Sarv Saksham pre-com mains now 3999 now very affordable courses are here for OCS Odisha Civil Service Examination
ठीक अच्छे मनी बैंकिंग रो क्वेश्चन को टाइप रा आसीबो क्वेश्चन करबा हम किछि एमसीक्यू सेशन से आनिबा आगो हैला लॉन्ग क्वेश्चन से तो मेंस रो क्लास आसे मेंस क्लास रे अनेक गुडे लॉन्ग क्वेश्चन मु कराए এবং लॉन्ग क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट आल्सो फॉर मेंस जेहेतु हम प्रीलिम स्पेसिफिक क्लास करूचे तो एठी लॉन्ग क्वेश्चन किसी आवश्यकता नाही एठी हम केवल प्रीलिम्स ପାଇଁ पढिया 1 to Nilambar you want to crack in 10 months yes absolutely possible 10 months time it is good enough to prepare and to crack within 10 months you the preparation करूछंती then easily you can crack this is absolutely possible हैला so you prepare well the only thing I will advise is you prepare well all the best any other question ओके ताले हम आसबे पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी दीटा टॉपिक ऊपर डिस्कस करिया फर्स्ट देखिए आज पब्लिक फाइनेंस डिस्कस करना व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन कोन कहली रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ना प्रॉब्लम कोन गोटे छोटो इंपोर्टेंट पॉइंट बुझौची देखो लेट्स से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी हैला ए एंड बी मनकर ए रा इनकम होची 80,000 बी रा इनकम हैला केतना 50,000 हैला ताले ये जिरान का इनकम रा डिफरेंस केते डिफरेंस इक्वल टू 3000 टका होची डिफरेंस केते डिफरेंस होची केते 3000 टका फॉर्म फिल अप डेट शिवांगी कहितली परा ऑलरेडी मु गोटे वीडियो आनीथली ता ऊपर देखि परिबे समस्त फॉर्म ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसे गलानी 20 जनवरी रु 20 फेब्रुआरी 20 जनवरी रु 20 फेब्रुआरी अप्लाई करि परिबे ठीक अछि नाउ डिफरेंस केते मते एठी को ए और बी रो इनकम भीतर डिफरेंस केते ना 30,000 टका हां कि नहीं ए और बी रो इनकम भीतर डिफरेंस केते 30,000 नाउ लेट्स से दिस इज बिफोर टैक्स ये किसी टैक्स दोनी कि से किसी टैक्स दोनी बिफोर टैक्स नाउ आफ्टर टैक्स देला परे लेट्स से ये देला 30% टैक्स 80,000 30% 24,000 ये देला 30% टैक्स 50,000 30% 15,000 टैक्स देला परे या पाखर केते रहिला 56,000 या पाखर केते रहिला 35,000 नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ला एठी केते ना 21,000 रो डिफरेंस केते 21,000 रो डिफरेंस नाउ एठी केते थिला 30,000 डिफरेंस एठी गेला केते ना 21,000 रो डिफरेंस ये जो टैक्स टंकाटा कहा पाकु जीवो ये टैक्स टंकाटा कहा पाकु जीवो ना ये टैक्स टंकाटा जीवो गवर्नमेंट पाकु गवर्नमेंट से टैक्स टंकाटा नहीं कोन करिवो गवर्नमेंट से टैक्स टंकाटा को नहीं कोन करिवो ना गवर्नमेंट से टैक्स टंकाटा को नहीं की कोडी यूटिलाइज करिवो सेविंग्स केते रहबा ठीक है तो ये गवर्नमेंट ई टंकाटा नहीं गवर्नमेंट कोन करिवो ना डेवलपमेंट करिवो डेवलपमेंट रास्ता घाट पानी बिजुली हेल्थ एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करियो बर्तमान जो रास्ता तैयारी हो एथरे कोन केवल ए जीवो बी जीवोनी बी भी जीवो ए भी जीवो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जहां भी हबो ओपन फॉर ए एंड बी बोथ त माने एठी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करा गला यार जो इनकम हला याको टैक्स माध्यम रे आटू नै की कोन करा गला ना एठी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा गला बुझेला सो व्हाटएवर इनकम वी हैव रिसोर्स मोबिलाइजेशन एवं यूटिलाइजेशन हमें करूचे कौन कहली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन एवं यूटिलाइजेशन हमें करूचे टू अकम्प्लिश स्टेट एक्टिविटीज एट ऑल द लेवल्स दैट वाज पब्लिक फाइनेंस सो पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपली ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर व्हिच इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बुझी पारिले मो कथा कि नाही कोंतु कौन कहल दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू मींस कौन इनकम यार इनकम केते एवं खर्च केते ई कथा ही हम देखुचे कौन कहल यार इनकम केते और खर्च केते ई दीटा पॉइंट हम देखुचे क्लियर सो पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नेक्स्ट नाउ पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट बजेट बा बजेट जोटा हम देखले पब्लिक फाइनेंस ताको बजेट बोली मते कहा जाय बजेट रो सब बजेट शब्द रो अर्थ कोन बजेट शब्द रो अर्थ कोन यार अर्थ होची गोटे सिंपली गोटे लेदर बैग कौन लेदर बैग देखिए जो बजेट आसे फाइनेंस मिनिस्टर छिड़ा गोटे लेदर बैग धरिक मझे साइड रे अफसर मान सब छिड़ा सो लेदर बैग व्हिच कंटेन्स इनफॉरमेशन अबाउट द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो लेदर बैग रे गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इनफॉरमेशन थाए
ताको हम बजेट बोली कहूचे क्लियर व्हाट इज बजेट clear what is budget now budget whether this budget is it a constitutional term answer is absolutely yes it is mentioned in the constitution kodi article 112 re mention hechi this is mentioned for the central government budget create kari paribo article 202 re mention hechi kona state government pai ba state government tar budget tiyari kari paribo so budget is absolutely constitutional kahinki because it is mentioned in the constitution article 112 and 202 112 and 202. Now, when we talk about budget, generally we come across two type of budget. One is the general budget, another one is the railway budget. Now, etu question kon asio mu directly question ko asu. Ebe railway budget ebong general budget misi jaichen, misi ki gote budget hei jaichen. Kon jeta misi ki gote budget hei jaichen. Hela. Now, railway budget is separated from general budget since 1921. 1921 hoitila on the recommendation of Upworth committee. Please remember. On the recommendation of Upworth committee recommendation re 1921 re railway budget was separated from general budget but 2017-18 recently just 8 years back general budget was merged with the railway budget now ye kete na on the recommendation of Vivek Debroy committee now kete it is merged on the recommendation of Vivek Debroy committee. Now these two committee, name of these two committees are important. Upworth committee and Vivek Debroy. Upworth committee separate करिदेला रेलवे बजेट को जनरल बजेट रु एवं ये कौन कला ना बजेट को विवेक देब्रॉय कमिटी कौन कला ना ये मर्ज करदेला जनरल बजेट को विथ द रेलवे बजेट क्लियर सो बजेट रे सबले तीनटा फिगर थाए कौन कहली बजेट रे तीनटा फिगर थाए कौन कौन ना मन कर करंट ईयर नवा करंट ईयर टा हमर केते ना 2025-26 करंट ईयर 2025-26 सो प्रीवियस ईयर रो बजेट प्रीवियस ईयर रो डाटा तमन 2024-25 रो डाटा एवं कमिंग ईयर 2026-27 ये तीनटा ईयर रो डाटा हमें नउचे करंट ईयर रो डाटा प्रीवियस ईयर रो डाटा एडाला करंट ईयर डाटा एंड दिस इज प्रीवियस ईयर डाटा एंड नेक्स्ट ईयर डाटा वा अपकमिंग ईयर डाटा तीन वर्ष रो डाटा को आमे नउचे कोथरे ना एठी बजेट रे नेक्स्ट फंड तीनटा टाइप रो फंड ऊपर बेसिकली एठी डिस्कशन होय कोन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया फर्स्ट हम देखिबा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कोन देखिबा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1 रे मेंशन हेची अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केते कहले आर्टिकल 266 क्लॉज 1 रे मेंशन हेची about consolidated fund of India. So, all the revenues by government of India, all loans raised by government of India by use of treasury bills, loans, ways of means advance, ये सब गुड़ा आसीबो कोथरे ना consolidated fund of India. मतलब रिकॉल करे देबे गतकाली मु डिस्कस करथली अबाउट वेज एंड मींस एडवांस WMA. व्हाट इज WMA के मन रखछन काली रो क्लास रो गतकाली रो क्लास रे वी डिस्कस्ड अबाउट WMA कार मने अछि वेज एंड मींस एडवांस कार मने अछि quick what is ways and means advance गतकाली रो क्लास रे पढै what is ways and means advance के कहि परिबे के गतकाली रो क्लास करथिले मोर कार मन नै एटलीस्ट एनीवन जणे केही भी अच्छा मत कहूँ हु इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट व्हिच बैंकर टू द गवर्नमेंट who is banker to the government RBI now can government take overdraft from RBI ओवरड्राफ्ट नहीं पारिबो जति टंका थिबो ताटू अधिक टंका उठेक नहीं पारिबो 5000 कोटी अछि 10000 कोटी नहीं पारिबो कि 5000 कोटी अछि मन कर 10000 कोटी नहीं पारिबो कि नहीं पारिबो यस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल हां कि नहीं that overdraft facility given by RBI to the bank is known as ways and means advance please remember this is a very potential question for prelims prelims ये गोटे बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन तो ये पॉइंट को मन रखत
कौन कहली प्रिलिम्स जेहेतु ये गोटे पोटेंशियल क्वेश्चन आपको क्लियरली मन रखु ऑल द रेवेन्यूज ताले देखले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ये कहूँ ऑल द रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया all the loans raised by the government of India by the issue of treasury bills, loans or ways and means advance, they are credited to this consolidated fund. Clear? What is consolidated fund of India? Now consolidated fund of India, the next fund is public accounts of India. So all the public money received other than consolidated fund of India that goes to the PSC. कौन कहली? All public money received other than CFI consolidated fund of India with the rest of the money that goes to that goes to PSC. In article 266 clause 2 रे एटा मेंशन है कोडी मेंशन है इन आर्टिकल क्लॉज 66 क्लॉज 2 कंटिजेंसी फंड नाउ जदि किछ अनफोर्सिन सिचुएशन अर्थ कोन व्हाट इज अनफोर्सिन सिचुएशन के कहबे नाउ इमरजेंसी सिचुएशन जदि कोनोसी इमरजेंसी सिचुएशन आसे ताहले आर्टिकल 266 7 अनुसार contingency fund of India रो टंका डिस्पोज हे परियो now this is in the hand of this is with the hand of का हाथ this is with the hand of के ना president this is with the hand of the president of India हला typical this is in the hand of the president of India now पॉलिटी रे यापर अधिक पड़ितो this is called contingency fund now this तीनटा जाको फंड ऊपर आईडिया आसिला ना नहीं तीनटा जाक फंड ऊपर आईडिया आसिला कि नहीं ना डाउट अछि कोन व्हाट इज योर स्टेटस को जदि किसी डाउट आसिला को हे गला ओके तापर केतरा कांसेप्ट आसीबा रेवेन्यू एंड रिसीट मो एग्जांपल दोउची एग्जांपल अनुसार बुझिबे माने कर मु जॉब करची जॉब कला परे सैलरी पाइली मास को 50000 टका पर मंथ 50000 पर मंथ केते सैलरी हला केते ना 50000 पर मंथ माने कर मो हला मते 50000 अंटिलानी मु लोन नेली जणा को लोन नेली केते ना 20000 टका पुन केते नेली लोन नेली 20000 गोटे नेली सैलरी 50000 पर मंथ आ गोटे लोन नेली केते ना 20000 पर मंथ नाउ ये सैलरी मते रिपेमेंट रा आवश्यकता अछि कि बिकॉज़ देयर इज नो रीपेमेंट कौन कहल देयर इज नो रीपेमेंट हैला एंडी लोन केते कहल ना लोन कहली 20000 रो लोन केते कहल ना लोन कहली 20000 रो लोन एटा रिपेमेंट दरकार इट हियर रिपेमेंट इज देयर यस रिपेमेंट यू नीड रिपेमेंट सो व्हिच कंप्लीटली बिलोंग्स टू द रिसीवर एठी रिपेमेंट नाही बुझो चेष्टा करो मो सैलरी केस रे रिपेमेंट नाही सो इट बिलोंग्स टू द रिसीवर सो रेवेन्यू कोन कहबी मु रेवेन्यू बिलोंग्स टू कंप्लीटली बिलोंग्स टू रिसीवर नो रिपेमेंट रिक्वायर्ड नो रिपेमेंट रिक्वायर्ड किसी रिपेमेंट रा आवश्यकता नहीं एठी बुझला बट रिसीट्स दे नीड रिपेमेंट रिसीट्स नीड रिपेमेंट बुझला रेवेन्यू कोन और रिसीट कोन दीटा जाक टर्म हम यूज करिया वर्तमान बोथ दिस टर्म्स विल बी यूज्ड हियर अभी देखिए रेवेन्यू रिसीट कोन एंड कैपिटल रिसीट कोन रेवेन्यू और कैपिटल ये दीटा टर्म हम यूज करिया वर्तमान आउ दीटा टर्म्स रेवेन्यू एंड कैपिटल आको मन रखिबे मन रखनु रेवेन्यू आ गोटे टर्म हला कैपिटल रेवेन्यू कोन ना दिस इज वन वे ट्रांजैक्शन कोन कहल रेवेन्यू टा कोन ना रेवेन्यू टा वन वे ट्रांजैक्शन कैपिटल जो यूज करछे दैट इज टू वे ट्रांजैक्शन कोन कहल रेवेन्यू इज ऑलवेज वन वे ट्रांजैक्शन and capital is two-way transaction बुझी so it is revenue is not required again to be paid याको दिथर पेमेंट हबनी एग्जांपल देले बुझ पर रेवेन्यू रिसीट कोन देखो
revenue receipt कहली one way transaction, so this it is not required to be paid again to the payee by the government. For example, तीन प्रकार रेवेन्यू अछि, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एवं अदर नॉन टैक्स रिसीट्स. कौन कहली टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड अदर नॉन टैक्स रिसीट्स. तो टैक्स रेवेन्यू कौन ना जो गुडा हमको टैक्स माध्यम रे सरकार को मिले. नाउ इट इज वन वे, मु टैक्स देली गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, गवर्नमेंट कौन ता बदल रे मते किछि दउची कि, मु गवर्नमेंट को टैक्स देली, गवर्नमेंट कौन ता बदल रे मते किछि पेमेंट दउची कि. सो टैक्स इज अ वन वे ट्रांजैक्शन और टू वे मते प्रथमे कोन गवर्नमेंट रो जो टैक्स आसिला दैट इज वन वे और टू वे टिके कहले मते टैक्स ता कौन लिखछो केके विथ बाइक. हेलो हैप्पी न्यू ईयर केके, यू वांट टू जॉइन ओपीएससी, ठीक है जॉइन कर पारे. गो टू द पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन ने जॉइन कर पारे, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू कैन जॉइन. हैला दिस इज वन वे, टैक्स इज वन वे, हां कि नहीं. ताले ये हैला रेवेन्यू रिसीट को टिके देखंतु. रेवेन्यू रिसीट, receipt belongs to the kahar कहथिल, receipts belong to the receiver, it is not required to be paid again. revenue again same, then revenue रे revenue receipt रे हम कोन देखिल ना one way transactions like tax revenue, non tax, other non tax. tax revenue किए गवर्नमेंट को को माध्यम रे टैक्स मिली थाए, कोन कहली गवर्नमेंट को को माध्यम रे टैक्स मिले. फर्स्ट एग्जांपल इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी. यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहा ऊपर लागे ना, इट इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्यूल पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, या ऊपर लागे जोटा तो कहला हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी. कोन कहली या ऊपर जोटा लागे हम त कहते यूनियन एक्साइज ड्यूटी. बुझिला यूनियन एक्साइज ड्यूटी ने जीएसटी, तो जीएसटी टा होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज जीएसटी ना, जीएसटी इज indirect tax हैला. then the next is custom duty. custom duty कोन ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर जो टैक्स लागे ताको हमें कस्टम ड्यूटी कोन. कोन कहली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर जो टैक्स लागे ताको हमें कस्टम ड्यूटी कहू ना. कंपनी रो प्रॉफिट इनकम ऊपर जोटा लागुची ताको कॉर्पोरेट टैक्स कहूचे. कोन कहली कंपनी रो प्रॉफिट इनकम ऊपर जोटा लागुची ताको कोन कहूचे ना ताको कॉर्पोरेट टैक्स कहूचे. बुझेला कॉर्पोरेट टैक्स जेमति मोर पर्सनल इनकम ऊपर टैक्स लागले ताको कहूचे इनकम टैक्स. ठीक सेमति कंपनी रो इनकम ऊपर जो टैक्स लागुची ताको कहूचे हमें कॉर्पोरेट टैक्स. क्लियर. प्रॉफिट, दिस इज imposed on company's profit income, so income tax on individual. then taxation of union territory tax उडा का मतलब other taxes and duties like wealth tax. wealth tax वर्तमान नाही, wealth tax is abolished, ताको tax class रे कहिबी. wealth tax वर्तमान ଆଉ नाही, wealth tax has been abolished. बुझिला कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स अधिक बिकॉज कॉर्पोरेट रो ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, बहुत टंका समान प्रॉफिट अधिक एंड हेंस टैक्स अधिक, समान प्रॉफिट अधिक हेंस टैक्स अधिक. बुझिला टैक्स रेवेन्यू पार्ट क्लियर. नॉन टैक्स को आसीबी ना जोटा टैक्स माध्यम रे गवर्नमेंट को मिलिला ताको हम कहले टैक्स रेवेन्यू. कोन कहली जो गुडा कोन टैक्स माध्यम रे गवर्नमेंट को मिलिला ताको हम कहले टैक्स रेवेन्यू. जोड़ा को नॉन टैक्स माध्यम रे मिला बिना टैक्स रे, जोड़ा को नॉन टैक्स बिना टैक्स रे मिलेला ताको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू. एग्जांपल कोन नॉन टैक्स रो इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट. इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट. बुझिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भलो ऑप्शनल नहीं परियो, नो प्रॉब्लम. यू कैन टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल. ठीक अछि.
So interest income from loans given by central government to state government, that is called interest receipt. Now dividend and profit ऊपर जोटा है तब कलम income from shares held by government in private and semi government enterprise. Food in government and semi government enterprise जोटा है तब कलम dividend and profit. मतलब राशि हम other non tax receipt को जोड़ा का other non tax receipt भीतर किए जाउची. फर्स्ट इज काली मु कहतली सीनियरेज कहार मन अछि व्हाट इज सीनियरेज काली क्लास करथिले समस्त सीनियरेज कोन की कहबे की कहबे मते व्हाट इज सीनियरेज सीनियरेज कोन करिन ठीक अछि जो माने करथिले से माने कोंतु सीनियरेज रे कोन बुझैतिल सीनियरेज काली देखो बुझौछु मन कर गोटे 500 टंकार नोट देखुचे आमे मते कोई ये 500 टंकार नोट को तयारी किए करूची इट इज प्रिंटेड बाय आरबीआई को 500 टंकार नोट तयारी करिया पई केते टंका खर्च होतुबो कोन आरबीआई को 500 टंका खर्च होतुबो ना 500 रु अधिक ना 500 रु कम 500 टंकार नोट तयारी करिया पई आरबीआई को केते टंका खर्च होतुबो 500 रु कम ना अधिक ना समान तो जनरल देखियो 500 टंका रु कम कहने बिकॉज़ मनीटा कोउतरु बनी दिस इज मेड फ्रॉम कॉटन रैग एटा कॉटन रैग रही नहीं लो खर्च होतो मन कर एटा करिया 50 टका खर्च 50 टका खर्च सो 50 टका माइनस कर देले केते टका एक्स्ट्रा 450 टका now this 450 rupees is called profit 450 rupees is called एटा को हम कोन कहते एटा प्रॉफिट कहते बा दिस प्रॉफिट इज नोन एज सीनियरेज ये प्रॉफिट को कोन कहते दिस प्रॉफिट इज नोन एज सीनियरेज कहने तली काली तो करेंसी एवं कॉइनेज मिंटिंग माने जोडा कॉइन बना होछ कॉइन मिंटिंग रो जोडा बेनिफिट मिले तको फिस्कल सर्विस हला ये दिस इज आल्सो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू ये गवर्नमेंट रो से टंका कहार एक्स्ट्रा टंका कहार सरकार रो एक्स्ट्रा टंका कहार ना गवर्नमेंट रो now other fiscal services amount paid by RBI towards international obligation like मुके IMF membership बा वर्ल्ड बैंक रो मेंबरशिप पई एठी जदी पेमेंट करूची से गुडा गला कोथरे ना दिस इज इन अदर नॉन टैक्स सॉरी अदर fiscal services कोथरे कहल दिस इज इट कम्स अंडर अदर fiscal services other general services जो गुडा माने पब्लिक सर्विस कमिशन लाइक ओपीएससी यूपीएससी रो आसिला सेंट्रल पुलिस रो जो गुडा आसिला ये सब गला कोथरे जनरल सर्विस सोशल सर्विस that from departments like education sports culture एथुर जो गुडा आसिला त कहले सोशल सर्विस now economic service receipts from departments like agriculture allied activities irrigation flood control एठु जो गुडा आसिला त कहले कोन that is called economic service कोन कहले ताको ता कहले इकोनॉमिक सर्विस बुझियला इकोनॉमिक सर्विस रे कोन आछे देन ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन माने मन कर यूएसए बा यूके ए माने इंडिया को किछि ग्रांट कले तो कहला ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन कोन कहले दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन नो ये पांचटा पॉइंट्स एवरीवन क्लियर फिस्कल सर्विस अंडर फिस्कल सर्विस मींस रिलेटेड टू मनी ये पांचटा पॉइंट समस्त क्लियर तापर आगु बुझिबी गुड तापर आसबे हमें कैपिटल रिसीट्स तापर नेक्स्ट आसबा कैपिटल रिसीट्स नाउ रेवेन्यू रिसीट्स कहथिले वन वे ट्रांजैक्शन नाउ कैपिटल रिसीट्स दे आर टू वे ट्रांजैक्शंस है कोन कहल दे आर टू वे ट्रांजैक्शंस एटा केते बेले मन कर लोन जण को देइचो से लोन ने तुम कोन इंटरेस्ट पेमेंट कला
कौन है सेठी ना इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, recovery of loans given to others, fresh loans raised by government, next fresh loan raised by government, fresh loans raised by government, government जो loan raise करता है ये सब आसिबे कोथना टू वे ट्रांजैक्शन बाय आसिबे कोथरे कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स को दी भाग रे डिवाइड करा जाए, गोटला डेट कैपिटल रिसीट आ गोटला नॉन डेट कैपिटल रिसीट, कौन कहली डेट गोटेला डेट कैपिटल डेट डीईबीटी जोटा डेब्ट लिखुछ डीईबीटी डेब्ट एथरे बीटा साइलेंट रुहे पढ़ंती कोन ना को पढ़िबो डेट, डेट कैपिटल रिसीट आ गोटला नॉन डेट कैपिटल रिसीट. Now what is debt capital receipt and what is non debt capital receipt? Debt capital receipt साधारणतः दुई प्रकार, गोटेला borrowings and other liabilities. कौन कहली borrowings किए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा बोरो करूची कोदो एको पब्लिक डेट बोली मध्यम कहा जाए. Public debts are the money raised on the security of consolidated fund of India and it is repayable out of the consolidated fund. Consolidated fund of India को देखे कि हमें टंका आनिबा जणा को and settle repayment करा जो that will be the burden will be on the consolidated fund of India हैला. एवं जो borrowings करूचे हमें जो borrowings करते that borrowings are of two types, one is internal borrowings and external borrowings. कौन कहली borrowings केते दी प्रकार गोटेला internal borrowings and external borrowings. इंटरनल बोरोइंग्स नारू जना पड़ुछि कोन इंटरनल बोरोइंग रो सोर्स कोन सोर्स ला इनसाइड इंडिया, इंटरनल बोरोइंग्स रो सोर्स कोन ना सोर्स इज इनसाइड इंडिया एंड एक्सटर्नल बोरोइंग रो सोर्स ला कोन ना आउटसाइड इंडिया. पूछेला कि नहीं गोटेला इनसाइड इंडिया आ गोटेला कोन ना गोटेला आउटसाइड इंडिया. क्लियर. This is the money internal source money borrowed within the country from various sources. कौन कौन पर ना फर्स्ट इज द मार्केट लोन, फर्स्ट कौन कहली फर्स्ट इज मार्केट लोन. मार्केट लोन एटा किने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो कोड ना मार्केट रो नबो एर मैच्योरिटी केतना मैच्योरिटी 12 months. So market loans are raised by issuing bonds dated securities to public and financial institutions. केमिन हुए मार्केट लोन्स कोड इशू हुए ना दे आर इशूड. Market loans are raised by issuing bonds dated securities to public and financial institutions. बुझेला market loan कौन. And second one is treasury bills. Treasury bills are short term. Treasury bills are short term. एगुडा को zero coupon bond बोली मध्यम कहा जाए. कौन कौन these are also known as zero coupon bond. Zero coupon bond कौन जीरो कूपन बॉन्ड कौन देख मन कर तुम्हें 100 टंकार गोटे जगह 100 टंका लोन दे तुम्हें इंटरेस्ट सहित 120 टका पाइब कि 110 टका पाइब अधिक पाइब यहाँ लिखाई तार यहाँ फेस वैल्यू एति टका लिखाई फेस वैल्यू तुम्हें तापर इंटरेस्ट सहित पाइल यहाँ रिटर्न दिस इज द रिटर्न. जब एमती न कि हुए कौन बेले बेले ये को जी टंका लिखाई तो व्हाट एवर द फेस वैल्यू 100 टंका लिखाई तुम्हें 2 year लगेला 2 वर्ष पर 100 टंका ही पाइब जहाँ लिखाई से ही पाइब ताठू अधिक पाइबन. तुम कहता मुझे बेनिफिट कौन पाइ ना बेनिफिट ये बॉन्ड को किणला बेले तुम 100 टंका कम 90 टंका किणी केते यार किणा दाम थी केते 90 टंका. हाँ नो इंटरेस्ट से ही कहना चाहिए ये 90 टंका देकर किणी बट फेस वैल्यू 100 जी लिखाई तुम से पाइब 100 टंका पाइब किणला बेले वैल्यू डिस्काउंट होगी पाइब जीरो कूपन बा डिस्काउंटेड बॉन्ड बोली कहा जाए. बुझेला जीरो कूपन और डिस्काउंटेड बॉन्ड कौन एंड ट्रेजरी बिल कौन. ट्रेजरी बिल ऊपर से क्वेश्चन पचार यही पॉइंट को से क्वेश्चन पचार मुझे पॉइंट कहूँ जो पॉइंट क्वेश्चन आसो जोटा पोटेंशियल पॉइंट टू बी रेज्ड एज अ क्वेश्चन इन ओसीएस प्रीलिम्स सही पॉइंट ऊपर मु डिस्कस कर. नाउ इज दिस क्लियर व्हाट इज द ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल बुझिल ना नहीं बुझी पारलानी मत
समस्त कहूँ ट्रेजरी बिल बुझिले ना नहीं बुझी पारे बुझी पारे क्लियर वेरी गुड इट इज अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड बोली मध्य आपको कहा जाए नेक्स्ट अदर इंटरनल डेट्स आउ को माध्यम रे इंटर डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आनी परियो मु केतरा पॉइंट इत्र सब गुडा कहबिनी जोडा के इंपोर्टेंट कहबी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज वेज एंड मीन्स एडवांस so mu already कहि छथि दिस इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की एटा वेज एंड मीन्स एडवांस इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी by whom by RBI to whom not to government of India by RBI and to the government of India बुझेला तो कहला हम वेज एंड मीन्स एडवांस क्लियर वेज एंड मीन्स एडवांस कौन नेक्स्ट कंपेंसेशन बॉन्ड्स ना कंपेंसेशन बॉन्ड कौन मन कर जणु किछि गोटे स्कीम आनुची गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी आनुची ता पई किछि क्षति होची मोर ता बदल रे से मते कंपेंसेशन दे दो और से जो कंपेंसेशन दिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड तो कोन कंपेंसेशन बॉन्ड बुझिला दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन बॉन्ड तो हम कंपेंसेशन बॉन्ड बोली कहू क्लियर जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल गुडा कानी था तार टाइम पीरियड कम कौन कहली ट्रेजरी बिल रो टाइम पीरियड कम दिन भीतर ताको रिटर्न देवा पड़ियो सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स बेले बेले कौन हुए ना शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल गुडा को कन्वर्ट कर दिए से कोथरे ना लॉन्ग टर्म लोन हैला कौन कहली शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल टा कन्वर्ट करा जाए कोथरे ना लॉन्ग टर्म लोन सेटा कौन कहा जाए ना दैट इज कॉल्ड फंडेड सिक्योरिटी एटा कहते हमें फंडेड सिक्योरिटी बुझेला व्हाट इज फंडेड सिक्योरिटी बुझेला व्हाट इज फंडेड सिक्योरिटी सो इन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आर कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज कॉल्ड फंडेड सिक्योरिटी सिंपल किछि नै तो ये तीनटा इंपोर्टेंट ये तीनटा कहूची एटा 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 ये तीनटा इंपोर्टेंट और रेस्ट गुडा दरकार नै स्किप कर दउ नेक्स्ट एक्सटर्नल बोरोइंग ये गला इंटरनल बोरोइंग का इंटरनल बोरोइंग्स गला तापर ला एक्सटर्नल बोरोइंग रो सोर्स कोन मते टिके कहि देबे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग कोड आसुची एटा व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग जन इंटरनल बोरोइंग रे हम देखले इंटरनल सोर्स आसुची माने इंडिया भितरु रेज होची एक्जेक्टली इन द सेम वे एक्सटर्नल बोरोइंग रे एटा कोड रेज होची इट इज रेज्ड फॉरेन सोर्स वेरी गुड एक्सटर्नल बोरोइंग रे कोड होची एक्सटर्नल बोरोइंग रे एटा होची फॉरेन सोर्स हैला फॉरेन सोर्स तो एटा दी प्रकार एक्सटर्नल बोरोइंग को दी भाग रे क्लासिफाई करा जाय गोटेला मल्टीलैटरल लोन आ गोटेला बायलैटरल लोन कोन कहली गोटेला मल्टीलैटरल लोन आ गोटेला बायलैटरल ना बायलैटरल माने कोन से गोटे सिंगल कंट्री हमकु दोउची बायलैटरल रो एग्जांपल जदी मु कहबी एग्जांपल ऑफ बायलैटरल यूएसए टू इंडिया और यूके टू इंडिया कोड कहली यूएसए और यूके टू इंडिया इनला मल्टीलैटरल सॉरी बायलैटरल कहीं बायलैटरल माने दीटा पक्ष जो उठानी बायलैटरल बाय टर्म यूज है मल्टीलैटरल टर्म कोड यूज हो मल्टीलैटरल टर्म कोड यूज हो मल्टीलैटरल टर्म कोड यूज होची ना फॉर एग्जांपल मु कहबी आईएमएफ बा वर्ल्ड बैंक कोड कहली आईएमएफ बा वर्ल्ड बैंक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जेतो इंडिया नै छी कोड जेतो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन नु इंडिया नै छी हला त कहला हमें
मल्टीलैटरल लोन बुझेला मल्टीलैटरल कौन बायलैटरल बायलैटरल ले सिंपली गोटे कंट्री नौची सिंगल सोर्स नौची मल्टीलैटरल ले ये डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक उठ नौची करेक्ट नेक्स्ट आ गोटे पॉइंट को आसीबी नॉन डेट कैपिटल रिसीट डेट कैपिटल रिसीट गुड़ा डिस्कस कली देन द नेक्स्ट इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट कौन गुड़ा डेट माध्यम नुहे बट कैपिटल टू वे ट्रांजैक्शन इनवॉल्व फर्स्ट कौन गवर्नमेंट रो जहां लोन और एडवांस देछि गवर्नमेंट जहां जहां लोन और एडवांस देछि सेटा रिटर्न मिलिबो कि नहीं विथ इंटरेस्ट सेटा गवर्नमेंट को रिटर्न मिलिबो ना नहीं मिलिबोनी मिलिबो with interest सेटा गवर्नमेंट को रिटर्न मिलिबो यस मिलिबो हैला तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस नाउ पीएसयू व्यतीत जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रो अछि कोन कहली पीएसयू व्यतीत जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रो अछि ये कुछ तार डिसइन्वेस्टमेंट कोन कहली डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स अदर देन पीएसयू कोन कहली डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स अदर देन पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट माने गवर्नमेंट शेयर टाको बिक्री कर दो प्राइवेट सेक्टर ताको डिसइन्वेस्टमेंट कर जेम प्राइवेटाइजेशन देखुछ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट मु कहितली पूर्व प्राइवेटाइजेशन दिस इज फुल प्राइवेटाइजेशन और 100% प्राइवेटाइजेशन हुए नाउ डिसइन्वेस्टमेंट रे कोन हुए डिसइन्वेस्टमेंट रे कोन हुए ना पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट रे कोन हुए ना पार्शियल हुए हैला पार्शियल फुल न 100% न मु 10% ना 5% ना 4% एटा हला डिसइन्वेस्टमेंट बुझिला दिस इज द डिफरेंस सो ये कुछ डिसइन्वेस्टमेंट अदर देन पीएसयू एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस तो कहला हमें these are the amounts recovered by the government from disposal of assets so ये गला non debt capital asset so next is expenditure माने here we are talking about the government expenditure now को मते government expenditure को सेम दी भाग रे डिवाइड करा जाए गोटेला वन वे जोटा कहला हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटेला कैपिटल एक्सपेंडिचर on revenue expenditure and capital expenditure तले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोन गवर्नमेंट रो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन ना मु कहबी इंटरेस्ट पेमेंट जो लोन गुड़ा कानी थिला कौन कहली जो लोन गुड़ा कानी था तार इंटरेस्ट पेमेंट करिवो कि नहीं पुलिस डिफेंस रे जो पैसा गुड़ा खर्च होउछ पुलिस रे बा डिफेंस रे जो पैसा गुड़ा खर्च होउछ ना मु कहबी ग्रांटिंग एड ग्रांटिंग एड का यूनियन टेरिटरी बा स्टेट गुड़ा को ग्रांटिंग एड्स टू यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ देइछ एवं स्टेट गवर्नमेंट जो सैलरी दउची बा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सैलरी दउची जो पेंशन दउची एटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि नहीं वन वे कि नहीं ता बदले से कोन आउट माने तर बारंबार खर्च होउची कि बारंबार खर्च होउची सोशल सर्विस जहाँ होउची सोशल सर्विस माने हेल्थ एजुकेशन पोस्टल डेफिसिट जदि किछि होउची पोस्टल डिपार्टमेंट जदि किछि पोस्टल डेफिसिट जदि पोस्टल डिपार्टमेंट सब लॉस हुए तो कहते हैं पोस्टल डेफिसिट हैला जदि किछि ग्रांट दउची फॉरेन गवर्नमेंट को ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट को किछि ग्रांट दउची एठी सी भी आसीबो न नेपाल को देला भूटान को देला बुझी होची कि नहीं नेपाल भूटान को जदि किछि देला देन जदि यूनियन टेरिटरी किछि ग्रांट टू यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर ग्रांट्स टू यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर को यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर अछि को यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर अछि के कहि परिबे यस गवर्नमेंट जहाँ पेमेंट करूछि तो रेवेन्यू हैला वन वे थरे को यूनियन टेरिटरी अछि लेजिस्लेचर एटी कहली विदाउट लेजिस्लेचर एटी कोन कहले एटी कहली विदाउट लेजिस्लेचर
ये गला सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भीतर विदाउट लेजिस्लेचर किए को यूनियन टेरिटरी अच्छा विदाउट लेजिस्लेचर व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर इन इंडिया और विथ लेजिस्लेचर मत कह दियो को यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर अच्छी कह देले भी हो ये भी आसे क्वेश्चन पॉलिटी रो क्वेश्चन बट ये आसे वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन बारंबार आसे दिल्ली एंड पुडुचेरी वेरी गुड आ गोटे अच्छे नुआ क्रिएट होइछि तार भी लेजिस्लेचर अच्छी रिसेंटली क्रिएटेड जम्मू काश्मीर ऑलराइट ओके आ गोटे हला कोन कहले कैपिटल रिसीट सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर which it creates permanent asset it creates permanent assets जो परमानेंट एसेट क्रिएट करिवो तब कहला हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर सरला एती कथा व्हिच क्रिएट्स परमानेंट एसेट्स एंड जो एंड इट यील्ड्स पीरियोडिकल इनकम and it yields periodical income हैला क्लियर कले एति के ई पर्यंत समस्त बुझी गले ताले हमें टोटल एक्सपेंडिचर देखिले टोटल रिसीट केमती बाहरिबो जानले यदि मैं कहबी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट टोटल एक्सपेंडिचर पढ़िलो टोटल रिसीट पढ़िलो माइनस टोटल रिसीट तो मिलियो कोन व्हाट एवर विल गेन बजट डेफिसिट कौन को जेटा को बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर मन रखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इक्वल्स टू बजट डेफिसिट सेमती रेवेन्यू डेफिसिट कौन हम रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स है ना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स total expenditure minus total receipts except borrowings and other liabilities बुझेला इटा जहाँ अच्छी सेया total expenditure minus total receipts except borrowings and other liabilities that is called this is called fiscal deficit so it fiscal deficit minus interest payment जति कि interest payment है that will give you fiscal deficit minus interest payment it will give you primary deficit बुझेला primary deficit कौन clear what is primary deficit बुझेला what is primary deficit एति पाठ बुझेला बजेट रू ना बजेट रू क्वेश्चन आसले आज जहाँ डिस्कस कली सेम ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो या बाहर को क्वेश्चन आसीबोनी प्रीलिम्स रे या बाहर को क्वेश्चन आसीबोनी इज दिस क्लियर ताले टिक आउ थरे डिस्कस कर दबा जहाँ जहाँ पढ़िले कोन पढ़िले जस्ट टिक रिवाइज कर देबी सेम पॉइंट गुडा को मते कुह बजेट
Is budget constitutional? Yes or no? Quick response. ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देवे. Is budget constitutional? If yes, then in which article it is mentioned? Then this is mentioned in which article? (112) and budget किए करि परिबो? Central government only or state government or both or local government किए करि परिबे? budget तैयारी करिवार क्षमता कहाँ पाखरे अछि? Both. You can do. Okay. ହଉ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ रेलवे बजेट मर्ज ହେଲା रेलवे बजेट मर्ज ହେଲା जनरल बजेट सहित ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी? को कमिटी रिकमेंडेशन इट वाज मर्ज्ड? It was merged on the railway budget and general budget. They are merged on the recommendation of which committee and when? Very good, Santosh. Vivek Debroy. The correct answer is Vivek Debroy committee. My next question is, it was separated on the recommendation of which committee? It was separated on the recommendation of which committee? It come because it केवल सरोज important part cover कर सब कौन cover करि परिबा टाइम हो? On the recommendation of Awkward committee. बहुत बढ़िया. Awkward committee. Now next होची गवर्नमेंट को मिलुवा किछि टैक्स रेवेन्यू रो एग्जांपल देले. टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू गुडा टैक्स आकार रे मिलुछि किछि एग्जांपल देले. Tax revenue, example of some tax revenues to government. Income tax, GST, very good. Custom tax, very good. So tax, non-tax revenue example दियो. Non-tax revenue to the government. What are the non-tax revenues to the government? Non-tax revenues to the government. One example. Then ways and means advance tax किए कहाँ को दिए? What is ways and means advance? What is ways and means advance?
वेज एंड मीन्स एडवांस टा के क्या दिए देन आरबीआई टू गवर्नमेंट करेक्ट बायलैटरल लोन रो एग्जांपल किछि एग्जांपल ऑफ बायलैटरल लोन example of bilateral loan from one country to another for example US to India very good multilateral loan example of some multilateral loans correct अच्छा consolidated fund of India टा को article में mention है ची mention in which article consolidated fund of India is mentioned in which article next total expenditure minus total revenue is called or total receipt total expenditure minus total receipt is called total expenditure minus total receipt is called budget deficit budget deficit revenue expenditure minus revenue deficit is called revenue expenditure minus revenue deficit sorry revenue expenditure minus revenue receipt total expenditure minus total receipts except borrowings and other liabilities total expenditure minus total receipts except borrowings and other liabilities is called total expenditure minus total receipts except borrowings and other liabilities is called very good fiscal deficit minus interest payment is called fiscal deficit minus interest payment is called primary deficit very good ताले हे गला बुझिले समस्ते हां कि नहीं क्लैरिटी आसिला बजेट ऊपर क्लैरिटी आसिला कि नहीं पूछिए गला क्लियरली व्हाट इज बजेट एंड ऑल आई थिंक एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस ठीक अछि पुनी नेक्स्ट क्लास रे आउ किछ इंपोर्टेंट पॉइंट नै के आसी डिस्कस करिवि नेक्स्ट वीक क्लास रेगुलर दरकार की दरकार नहीं को योर चॉइस तुम चॉइस ऊपर डिपेंड करती क्लास दरकार नेक्स्ट आनिया कि नहीं if you need then I will come with some new topics if we are sufficient with economics then we'll stop economics sessions रेगुलर पी हो ठीक है ना जो मान को दरकार रेगुलरली मते कमेंट रे जणाबे एबे तो चैट रे जणा पड़ लेखा रहिबोनी कमेंट रे जणाबे कि न्यू टॉपिक जो मान को दरकार रेगुलर क्लास जो मान को दरकार कमेंट रे जणाबे आई विल कम विथ सम न्यू टॉपिक्स जो टॉपिक दरकार से टॉपिक मते कमेंट कर दे जो टॉपिक दरकार जो टॉपिक डिफिकल्ट लागुची जा कोन कहली जो टॉपिक जहा को डिफिकल्ट लागुची सेटा कमेंट रे